हेलो इन्वेस्टर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी इन्वेस्टिंग इनसाइड मिस ना करो। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे चैट जीपीटी के साथ होने वाली इन्वेस्टिंग बैटल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है। ओके चैट जीपीटी, लेट्स हैव एन इन्वेस्टिंग बैटल। यू प्रिपेयर ए पोर्टफोलियो ऑफ 10 स्टॉक and I will prepare a portfolio of 10 stock from the Indian stock market and let's see whose portfolio perform better till next year, May 14, 2026. Make sure market cap range is 5,000 crore to 1 lakh crore. सो बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने चैट जीपीटी को 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करने को कहा है और मैं भी 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करूंगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा 1 साल का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन रखी है मार्केट कैप को लेकर, जो कि रहेगा 5 लाख करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच और सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही काम होगा। मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रखने के पीछे का रैशनल था चैट जीपीटी का स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर क्या अप्रोच है, क्या सोच है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये फिगर आउट करना। कुछ फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड हुए, जैसे कि नो चेंजेस अलाउड फॉर द एंटायर ईयर, इक्वल वेटेज ऑफ 10% टू ईच स्टॉक। इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा 1 साल का, जो कि रहेगा 14 मई 2025 से लेकर 14 मई 2026 के बीच। Now let's discuss and break down a portfolio of the ChatGPT in detail and what was the rationale ChatGPT come up with while picking the stock. The first stock which was picked by the ChatGPT is the IDFC First Bank, belonging to the banking and financial sector with market cap of approximately 62,000 crore. What was the rationale given by the ChatGPT? Rapid retail book expansion, improving asset quality and strong leadership. This was the rationale given by the ChatGPT. Now the next stock belonging to the specialty chemical is Aether Industry with a market cap of 17,000 crore. And what was the rationale given by the ChatGPT? High margin niche product, research and development led growth and clean balance sheet. This was the rationale given by the ChatGPT. Third stock is Jyoti Lab, belonging to the FMCG sector with 9,500 crore market cap. And what was the rationale? Small cap FMCG with brand strength, margin recovery play. Fourth stock is a Syrma SGS, electronic manufacturer with a market cap of 10,500 crore and beneficiary of India's push for local electronics and robust order book. The next stock which is picked by the ChatGPT is a KFintech, which belonging to the fintech sector with approximate market cap of 10,000 crore. Please note ChatGPT is giving approximate market cap here, which is not exactly correct as market cap changes on a daily basis and market cap of KFin technology for now is not 10,000 crore. What was the rationale given by the ChatGPT? Play on financialization of Indian saving, strong margin, AMC and RTA services. Next stock, Jubilant Ingrevia, which belonging to the chemical and pharma intermediate sector with 9,000 crore market cap. And what was the rationale? Diversify play on pharma and chemical, undervalued relative to the peers as per ChatGPT. Please note, valuation is often a subjective matter. It's not an entirely objective, but rather it's a subjective. Each and everyone depict and each and everyone predict the valuation differently. The next stock picked by the ChatGPT is a Prince Pipe, belonging to the building material, especially pipe and fitting, with a market cap of 6,500 crore. Now, what was the rationale given by the ChatGPT? Low per capita uses of pipes and organized player gaining share. The next stock belonging to the gaming and media sector, Nazara Technology, with a market cap of 6,800 crore. And what was the rationale given by the ChatGPT? Proxy for India's growing gaming market, optionality from esports. The next stock is a Tarsen product, belonging to the healthcare ancillary and consumable ancillary, not exactly healthcare and consumable, but healthcare ancillary and consumable ancillary, with a market cap of 5,100 crore. Now, what was the rationale given by the ChatGPT? Labor supplier with high margin,
play on diagnostic and research and development strength. The next and last stock is a Balakrishna Industry belonging to the tire sector with a market cap of approximately 40,000 crore. What was the rationale given by the ChatGPT? Global export play, dominant in niche of highway segment. अब दोस्तों बात करेंगे मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक पिक्स के बारे में। दोस्तों सॉरी फॉर दिस बट अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा पोर्टफोलियो रिवील नहीं कर पाऊंगा सिंपली बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा पोर्टफोलियो बिना कन्विक्शन के कॉपी करे, क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है वो काफी स्टडी करने के बाद फुल कन्विक्शन के साथ में बनाया है, और मैं नहीं और मेरा कन्विक्शन नो मैटर व्हाट आपका कन्विक्शन नहीं बन सकता। हर किसी का इन्वेस्टिंग स्टाइल और रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। इन्वेस्टिंग इज नॉट ए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। लेकिन दोस्तों यू कैन हैव गेस एट माय स्टॉक इन पोर्टफोलियो। जैसे ही इस चैनल पर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को रिवील करूं। नाउ इट्स टाइम फॉर माय टेक ऑन ChatGPT's इंडिविजुअल स्टॉक पिक। हर स्टॉक को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ChatGPT की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजी को भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। ChatGPT के पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे स्टॉक है जो पर्सनली आई फील हैव द फुल पोटेंशियल टू बीट माय पोर्टफोलियो। अगेन दोस्तों कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में। अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा। पिछले 5 साल में पैसा लगभग 3 गुना के आसपास हो चुका है। पिछले 1 साल में काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा, -10% के रिटर्न देखने को मिले। अगर इन डिटेल टेक्निकल चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तो टेक्निकल ब्रेकआउट या रिवर्सल के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, बट वॉल्यूम्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल एस्पेक्ट, लिटरली एवरीवन इज बेटिंग ऑन मैनेजमेंट। बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल, अर्निंग एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट को लेकर। की रेशियोज के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो न्यूमरेटर में कैपिटल है और डिनोमिनेटर में रिस्क। दैट मीन्स मोर द नंबर सेफर इज द बैंक। इन द फाइनेंशियल ईयर 23 number was approximately 16.82%, which got reduced in the financial year 25. Now the numbers are 15.48%, a slight reduction. But don't worry friends, the limit set by RBI for the bank for the CRAR ratio is a 9% in India. GNPA and NNPA got significantly reduced. That signifies better asset quality. Now come to the PCR. PCR stands for provision coverage ratio. What PCR tells us? How much money bank has kept aside for a bad loans. Higher the number, safer is the bank. In the financial year 23, number was 80.29%. In the financial year 25, the number got significantly reduced to 72%. Now come to the CASA. That's the deposit, current account to saving account. Now in financial year 23, the current account to saving account ratio was 49.8%, which got significantly reduced in the financial year 25, and the number come in the range of 46%. Now if you compare this CASA ratio is very important ratio. Compared with peers, this CASA ratio looks significantly higher, which shows that company has access to cheaper funds, cheaper money. Cheaper the money bank purchase, the more the financing margin and then the more the profit. This is a really good aspect. This CASA ratio signifies the bank is on the right foot. डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। डिपॉजिट हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप, लेकिन दोस्तों डिपॉजिट ग्रोथ को इन आइसोलेशन देखना without keeping in mind inflation and income growth and in detail peer comparison will be the fatal mistake. So जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी है। इवन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, IDFC फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस स्पेशली इन केस ऑफ डिपॉजिट इज अ सेटिस्फैक्टरी वन। टॉकिंग अबाउट बैंक्स डिजिटल कैपेबिलिटीज
as you can see, talking about the bank's digital capabilities, any adoption of the technology in the banking is a satisfactory and commendable, which is again a big positive. दोस्तों अब हम इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का उनके पेयर्स के साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीई भी कंपैरिजन करेंगे और इंडस्ट्री पीई के साथ भी कंपेयर करेंगे और ग्रोथ की भी कंपैरिजन इन डिटेल कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और वेयर डज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एग्जैक्टली स्टैंड इसको भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो फिलहाल 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर पी एचडीएफसी बैंक के पी की बात की जाए तो 20 एचडीएफसी बैंक के पी की बात की जाए तो 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन आईसीआईसीआई बैंक के पी की बात की जाए तो 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक के पी की बात की जाए तो 21.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 34 पी मल्टीपल ऑफ 34। नाउ लेट्स लुक एट the profit growth, sales growth and all other factor. As you can see, ROE and ROC भी देख लेना और ऊपर से कितने प्रतिशत डिस्काउंट के साथ में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक and all other banks, you can clearly see that IDFC bank is still underperforming even though market has given IDFC first bank the premium valuation. Now look, HDFC bank down from 52-week high, it is down to only 2%. ICICI bank is at all-time high. But if you look at IDFC First Bank stock, it is down approximately 18%. So compared to its peer, it is still underperforming. Now let's look the more aspect of it. ROE और ROC भी देख लेना. Again IDFC First Bank का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है. अब यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ, क्वार्टरली प्रॉफिट्स की वेरिएशन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो 3 साल के सेल्स वेरिएशन की बात कर लेना, प्रॉफिट वेरिएशन की बात कर लेना, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस लैकलस्टर रहा है। सो अगर आप कंपनी के ऑल दीज मैट्रिक्स को कंपेयर करो, कीपिंग इन ऑल दीज मैट्रिक्स ऑफ द कंपनीज, आई डोंट थिंक सो IDFC First Bank will be able to beat my portfolio within 1 year time frame. So personally, I don't agree with ChatGPT's first stock pick. Stock number second, Aether Industry, belonging to the specialty chemical sector, having market cap of approximately 10,000 crore. Interesting bet from ChatGPT. दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे 2012 से लेकर 3 साल में सिर्फ 6% की तेजी देखने को मिली। दोस्तों डिसेंट लिस्टेड कंपनी होने की वजह से देयर इज नॉट मच टेक्निकल टू डिस्कस अबाउट। अगर इन डिटेल चार्ट पैटर्न स्टडी करो तो देयर इज नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। स्टॉक के टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट के साथ जस्टिस करते हुए नजर नहीं आते। फंडामेंटली कंपनी लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग विथ ए ग्रेट बिजनेस मॉडल, बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन द टेक्निकल। लेकिन दोस्तों गुजराती में एक कहावत है, प्राइस भगवान छे। एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग कंपनी गॉट प्रीमियम वैल्यूएशन, दैट्स व्हाई इवन आफ्टर वन पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स आफ्टर अनदर, स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। अब बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कंपनी is a sole manufacturer of many specialty chemical which are having widespread applications. So what are those applications? If you look at, these are the application: pharma 51%, agro 27%. These are the revenue by the application. Now interestingly, companies, if you look at the company's research and development infrastructure, company has entire one plant which is dedicated to the research and development facilities. एक ऐसे जमाने में जहां पर बहुत सारी इंडियन कंपनीज rather than focusing on research and development, they are interested in replicating the research and development of other companies once exclusive rights are over. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है where the end results are hit and miss. Once it is hit, really great for company, but once it is miss, it will create negative impact on the entire balance sheet. और इंडिया जैसे देश में जहां पर क्रिकेटर्स आर मोर पॉपुलर एंड रिच कंपेयर टू द साइंटिस्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड बजटरी एलोकेशन तो भूल ही जाओ। लुकिंग एट द बिजनेस मॉडल इज a huge plus but quite speculative. It is still in the nascent stage. There is enough scope for growth, but nothing concrete can be said. But still, it is a sole manufacturer of many specialty chemical.
No need to be afraid of competition. Looking at the quarterly results now, if you look at the quarterly results, both sales and profit are quite okay. If you look at the quarterly results over the period of time, sales are quite okay. If you look for many years, it is still been fluctuating in the same range bound manner. Same with the profit. If you look at the profit now, this is the exact range. If you look at the exact range of the profit is from 30 to 40 crores and 43 crores. So keeping in mind valuation, this profit number and sales number look quite okay. Nothing spectacular there. But one spectacular thing you can say about in this number is operating profit margin. Operating profit margins are quite stable, and over the period of time it keeps on increasing. So this is a huge plus. And looking at the balance sheet, company's balance sheet is looking great as well, as company is having net debt free status. So operating profit margin wise, chat gpt's pick look great, but as far as business model is concerned, this company is quite speculative in nature. So nothing can be said, nothing concrete can be said. So I don't either agree or disagree with the chat gpt's pick here. दोस्तों अगर हम सारे स्टॉक इन डिटेल डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, सो वी विल क्विकली जैप थ्रू रेस्ट ऑफ द स्टॉक. थर्ड स्टॉक, Jyoti Labs, belonging to the FMCG sector. ChatGPT is playing around the margin recovery and brand strength, but looking at the recent development and overall pressure in FMCG, things are not looking great. So I personally think this stock of the ChatGPT will not be able to be outperform my portfolio, and this is a big miss. Fourth stock, Sirmai SGS Technology. Stock is recently listed, so nothing much to be talked about. Chart pattern looks great though. Talking about the business model of the company, as you can see, company is a Chennai-based electronic manufacturing service provider. Now, talking about the product portfolio of the company offer printed circuit board assembly, radio frequency identification products, electromagnetic and electromechanical parts, motherboard and other memory products. Now, as you can see, company has 12 manufacturing facilities in North India, Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, in South India, Tamil Nadu and Karnataka, and with total area of 8,25,000 square feet, and serve 270 customer across 20 plus countries. So this is a great business model. Now talking about company's research and development facility, company has 3 dedicated research and development facility, 2 in Chennai and one in Gurgaon. Now talking about the revenue contribution in the financial year 25, company cater to the various sectors such as automotive sector, consumer sector, healthcare sector, industrial sector, and IT and railway sector. Talking about the geographical revenue bifurcation, company's main revenue come from 20% export and 80% from the domestic demands. Now talking about the clients, as you can see, many reputed companies such as the TVS Motor Company, A.O. Smith India, Water Products Private Limited, Eureka Forbes Limited, and Hindustan Unilever. These are the clients of this company. Now talking about the company's products, these products are sold in more than 25 countries, including countries like USA, Germany, Austria, and UK. Now recently company has entered into the manufacturing agreement with MSI for manufacturing laptops in India under the Make in India initiative. As you can see, keeping in mind all other recent development and government's push for Make in India product, I personally think this stock of the ChatGPT has a full potential to beat my portfolio. So great job ChatGPT here. Next stock, that's fifth stock, Kafin Technology, belonging to the financial services. I personally think this stock has a huge potential to beat my portfolio, as there is a sectoral tailwind going on. म्यूचुअल फंड सही है और ये स्टॉक पिक भी सही है. कीपिंग इन माइंड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रेट पिक ChatGPT. गुड जॉब. Sixth stock, Jubilant Ingravia,
दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल कमाल का है। कंपनी फार्मा एंड केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करती है। ओवरऑल 40 साल की लेगेसी है केमिकल स्पेस में। ओवरऑल 40 साल की लेगेसी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के सेल्स आर प्रीटी मच स्टैग्नेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1000 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ के बीच में कंपनी के सेल्स स्टैग्नेंट है। इन रिसेंट क्वार्टर, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, रिसेंट क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। यानी 14% के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ चुके। इसी क्वार्टर में प्रीवियस ईयर में 8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। और प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखोगे ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 13% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। यानी ओवरऑल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो सिग्निफिकेंटली अप हो रहे हैं। सो विच इज अ पॉजिटिव साइड नाउ। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी की बॉटम लाइन देखोगे ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की बॉटम लाइन भी स्टैग्नेंट रह चुके हैं। देयर इज नो ब्रेकआउट क्वार्टरली रिजल्ट्स एज सच। एज यू कैन सी द बॉटम लाइन इज सो मच स्टैग्नेंट। जब तक दोस्तों ब्रेकआउट क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आते तब तक स्टॉक प्राइस का स्काई रॉकेट होना काफी मुश्किल है। नाउ अगर हम देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी के रिजर्व सिग्निफिकेंटली गॉन अप। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग, स्पेशली शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। अगर बात करें कंपनी के कैपेक्स को लेकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कंपनी इज डूइंग, लुकिंग एट द कैपेक्स, कंपनी इज डूइंग सिग्निफिकेंट कैपेक्स। नाउ दोस्तों अगर ओवरऑल चीजों की बात की जाए, यानी ओवर लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन, अनसर्टेनिटी अराउंड and tariff related uncertainty, it will take at least 1 to 2 quarter for the things to normalize. Company needs to deliver breakout in a earning. If a company is managed to do, stock will skyrocket. But predicting about breakout quarterly results is not an easy task. Very hard to predict. That's why I am having neutral stance for the stock of ChatGPT. 7th stock, Prince Pipe and Fitting. दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कंपनी बिलोंग टू द मार्केट सेक्टर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी पीवीसी पाइप बनाते हैं और पीवीसी पाइप में कंपनी के पास ओवरऑल मार्केट शेयर 5% का है। अब मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और जिसका मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास का है। ओवरऑल पाइप एंड फिटिंग सेक्टर्स की बात की जाए दोस्तों, जो मार्केट लीडर है ना, उसका भी मार्केट कैप इतना कुछ ज्यादा नहीं है, 50,000 करोड़ के नीचे ही मार्केट कैप है। सो ओवरऑल अगर मार्केट कैप ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जाए, स्पेशली इन द पाइप एंड फिटिंग सेक्टर, दिस सेक्टर लुक्स गुड। बट दोस्तों अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए और किस पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 का है, ठीक है, और इंडस्ट्री पी है 48 का। यानी अब दोस्तों ये स्टॉक ऊपर से 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। इसके बावजूद आप देखोगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी इंडस्ट्री पे से नीचे आ चुका है। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिसकी वैल्यूएशन और ग्रोथ कंपेयर टू दिस स्टॉक बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन होगी। बहुत सारे स्टॉक है, आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर देखना कंपनी के बुक वैल्यू की बात की जाए तो प्राइस टू बुक रेशियो दो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 142 का बुक वैल्यू है। सो ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी फिलहाल वैल्यूएशन कंफर्ट के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये वैल्यूएशन कंफर्ट बना कम ऊपर से 53%, 56% की गिरावट होने के बाद। सो ओवरऑल अगर अर्निंग ग्रोथ को देखा जाए, आप देख सकते हो किस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2020 से लेकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 2020 से लेकर 2022 तक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 2022 से लेकर 2024 तक यहाँ पर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी के, तो प्रॉफिट में भी सेम हालत है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 2020 से लेकर 2022 तक
एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला। 113 करोड़ का प्रॉफिट जो कि 2020 में 113 करोड़ था, वो बढ़कर 250 करोड़ के आसपास हुआ, यानी मोर देन डबल हो चुका। लेकिन 2022 से लेकर 2024 तक अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस में मोर देन 50% का करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन, जब कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया तो वैल्यूएशन स्टॉक प्राइस काफी बढ़ चुका था। एक साल में 10 गुना या 2 साल में 10 गुना स्टॉक प्राइस हो चुका था। इसकी वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं था, और उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए तो इसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स को लेने के देने पड़ गए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर प्रॉफिट आप देखोगे ना, तो प्रीवियस क्वार्टर में आप देख सकते हो, इंटरेस्टिंगली प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर 2024 का क्वार्टर में कंपनी घाटे में चली गई थी। कंपनी को 20,000 करोड़ का घाटा हुआ था। 2023 में, दिसंबर 2023 में कंपनी को 38 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिले थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट में डिप देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई स्टॉक इज करेक्टेड बाय मोर देन 15%। सो ओवरऑल अगर ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, वैल्यूएशन को अगर देखा जाए और इन डिटेल पेयर कंपैरिजन किया जाए, तो पर्सनली आई फील दिस स्टॉक ऑफ ChatGPT is not do not have a full potential to beat my portfolio. So I personally think this is a big miss from ChatGPT. लेकिन दोस्तों, अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 21 मई को इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले। इंटरेस्टिंग होगा कि देखना किस तरह से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। अगर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स में बढ़िया और कमाल के रिजल्ट्स दिखाती है तो हो सकता है कि ChatGPT के पोर्टफोलियो का एक मेजर बूस्ट देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए कंपनी लुक्स इंटरेस्टिंग, बट इट डज नॉट हैव द फुल पोटेंशियल टू बीट माय पोर्टफोलियो। नाउ 8th स्टॉक, नजारा टेक्नोलॉजी। नजारा टेक्नोलॉजी का नजारा पिछले कुछ एक साल से काफी बढ़िया नजर आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक साल में निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो चुका है। कंपनी बिलोंग करती है गेमिंग और मीडिया इंडस्ट्री से। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया की ग्रोइंग फेज में, ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्री अभी भी इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी फिलहाल नासेंट स्टेज में है, और देयर इज इनफ स्कोप, इनफ पोटेंशियल फॉर द फर्दर ग्रोथ। अगर नजारा टेक की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंपनी के पास किसी भी तरह का वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, यानी 132 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी एंटायर मार्केट इज एक्सपेक्टिंग ए ग्रेट रिजल्ट, ए क्वाइट गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस कंपनी। दैट्स व्हाई जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 132 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस टू बुक की बात की जाए तो 3 के आसपास का ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पीई की बात की जाए तो 41.35 का इंडस्ट्री पीई है, यानी कंपेयर टू इंडस्ट्री पीई दिस स्टॉक लुक क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए, डेट मैनेजेबल है, 0.06 के डेट टू इक्विटी रेशियो है। दोस्तों, अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो 335 के बुक वैल्यू है। सो अगर वैल्यू, दिस आर द वैल्यूएशन मैट्रिक्स। दोस्तों, अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए, देयर इज एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड गोइंग ऑन। जैसा कि आप रेवेन्यू यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली हायर पेस के साथ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंटली अच्छे खासे पेस के साथ बढ़ रहा है। लेकिन अब यही कंपनी के प्रॉफिट्स भी उठाकर देख लो। अब देख सकते हो कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू इतने अच्छे खासे पेस के साथ बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार डिप हो रहे हैं। यानी 2000, अब देखो दिसंबर 2023 में कंपनी के प्रॉफिट्स 30,000 करोड़ के थे, फिलहाल 14 करोड़ के रह चुके हैं। अब यहाँ पर देख लो, रेवेन्यू देख लो किस तरह से बढ़ा है। दिसंबर 2023 में कंपनी के रेवेन्यू थे, यानी सेल्स थे 338 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 557 करोड़ के। यानी इसका मतलब क्या दोस्तों, कंपनी की टॉप लाइन तो अच्छी खासी तरीके से ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये ट्रेंड चेकआउट कर लेना किस तरह से पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अब प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का ट्रेंड देख लेना तो बढ़िया है, लेकिन कंपेयर टू दी रेवेन्यू कंपनी का प्रॉफिट्स रिलेटिवली एट ए स्लोअर पेस के साथ ग्रो हो रहे। दैट मीन्स कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से
बाजार सोच रहा है। अब कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी के प्रोडक्ट्स डिमांड में तो है, यानी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है कंपनी के प्रोडक्ट्स की। लेकिन दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे स्टेबल हो गए ना, तो आप देख पाओगे कि कंपनी की बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट भी अच्छे खासे पेस के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। दैट्स व्हाई मार्केट इज गिविंग प्रीमियम वैल्यूएशन टू दिस कंपनी। अब समझ आया कि इसकी ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करने के बावजूद भी एक साल में इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को क्यों मिली। अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए 26 मई 2025 को। अगर रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिले। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पिछले कुछ महीनों से अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। एक महीने में 33% की तेजी देखने को मिली, एक हफ्ते में भी 10% के आसपास तेजी देखने को मिली। सो ओवरऑल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी के साथ स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी के साथ परफॉर्मेंस जारी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए दोस्तों, तो रिटेल निवेशक के हाथ से माल लगातार खींच रहे हैं। कौन खींच रहे हैं? एक म्यूचुअल फंड वाले और फॉरेन इंस्टीट्यूशन। दिस इज अगेन ए ग्रेट साइन दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? रेगुलेटरी रिस्क। अगर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, अगर रेगुलेशन की तरफ से कोई निगेटिव न्यूज आती है तो इस स्टॉक्स को अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो आप कह सकते हो कि ये स्टॉक रिस्की है। दिस इज अ हिट एंड मिस काइंड ऑफ स्टॉक। लेकिन दोस्तों आई कैन सी वेयर इज what is point of view of stock GPT, and what was the exact rationale chat GPT come up with. So great choice chat GPT. I think this stock has the full potential to beat my portfolio. Ninth stock, Tarsan product. Now company belongs to healthcare ancillary segment. As you can see, company belongs to the healthcare ancillary segment. Now talking about the company's product, what does the company do? Company is India's leading labware company. ठीक है, कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, डेवलप करती है। व्हाट आर दिस प्रोडक्ट्स? कंपनी मैन्युफैक्चर, डेवलप पिपेट टिप्स, पेट्री डिश, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ट्रांसफर पिपेट, bottles, measuring cylinder. These are the products of companies. Now if you look the company's product portfolio, company has diverse range of products with more than 300 plus products. As you can see, what are the user industry? Which industry use these products quite extensively? Many research organizations, academic institutes, pharmaceutical companies, diagnostic companies and hospitals are using these products quite extensively. Now talking about the product segmentation and the revenue contribution, consumables derive 55% of the revenue, which include centrifuge wares, cryogenic wares, liquid handling, PCR consumable, petri dish, pipettes and other. What are these reusables? Bottles, beaker, measuring cylinder, tube racks, etc. Now as you can see, company derived revenue, majority of its revenue from the domestic, 70%. Domestic sell derives 70% of its revenue and export only 30%. Talking about the product mixture, branded product derive 35% of the revenue. Now talking about the manufacturing facilities, company has total 5 manufacturing facilities. 2 एडिशनल प्लांट सेटअप करने वाली है कंपनी आगे जाके। अब ये जो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ना दोस्तों, उसमें से सिर्फ एक ही कंपनी की खुद के ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है और 4 लीज पर लिए है कंपनी ने। ठीक है, अगर कैपेक्स की बात की जाए तो दोस्तों सिग्निफिकेंट कैपेक्स चल रहा है। अगेन दिस इज ऑन पॉजिटिव न्यूज। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, कंपनी का प्रेजेंस पैन इंडिया प्रेजेंस है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात की जा रही है। नॉर्थ इंडिया में कंपनी के 43 डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 15% का। साउथ इंडिया में 38 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 45% का। ईस्ट इंडिया में 41 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 16% का।
और वेस्ट इंडिया में 22 डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 24% का, यानी कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द साउथ इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ऑपरेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स मोर देन 40 कंट्रीज में सप्लाई होते हैं। कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्विजिशन किए। टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स, मेनी रेप्यूटेड कंपनीज आर द क्लाइंट्स ऑफ दिस कंपनी। इमामी हो, हिमालय हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, लुपिन हो, मैनकाइंड हो, नेस्ले हो, पतंजलि हो, सन फार्मा हो, एंकर हो, ये सारे रेप्यूटेड कंपनीज के क्लाइंट्स है। सो फिलहाल कंपनीज का प्लान क्या है, कंपनी के एक्सपांशन प्लान भी काफी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी प्लान्स टू एक्सपोर्ट टू 120 कंट्रीज। फिलहाल कंपनी के प्रोडक्ट्स 40 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन कंपनी प्लान कर रही है कि अपने प्रोडक्ट्स को 120 से ज्यादा कंट्रीज में नेक्स्ट आने वाले 5 या 10 साल में 120 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का कंपनी का प्लान है। अब यहाँ पर देख सकते हो ब्रांडेड सेल टारगेटिंग, यानी जो कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसको लेकर कंपनी के टारगेट्स अच्छे खासे है। ऑब्वियसली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़े आते हैं। इसकी वजह से कंपनी का एक मेजर फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंपनी इमर्जिंग मार्केट हो, जैसे कि एशिया पैसिफिक हो, मिडल ईस्ट हो, साउथ अमेरिका हो, यहाँ पर कंपनी अपने सेल्स को बनाना चाहती है। तो एक रहा कंपनी का फोकस। Looking at the chart pattern, it seems like ChatGPT is taking a bet on a beaten down reversal play. But compared with the broader market indices, this stock price move doesn't look good at all. Even after this much of a fall, valuation is still quite expensive. As you can see, the valuation is still an expensive even after this kind of fall. Even if you look at the revenue and profit year on year basis, as you can see, revenue year on year basis and quarter on quarter basis, and profit quarter on quarter basis and year on year basis, nothing looks flashy. One thing which I like about this stock is a higher operating profit margin, but beating my portfolio stock without with quarterly earning explosion looks quite unlikely. So sorry ChatGPT, I don't agree with this stock pick either. 10th and last stock, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बिलोंगिंग टू द टायर सेक्टर। दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री टायर सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसा कि आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देख पा रहे हो, कंपनी हैज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। लुकिंग एट द बिजनेस मॉडल, ग्लोबल रीच, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड with a great track record, along with a valuation comfort, this stock has a full potential to beat my portfolio. So great pick ChatGPT. By looking at the entire portfolio of the ChatGPT, I will give 6 out of 10 point. I personally feel portfolio is quite average. Keeping in mind 1 year time frame competition, I personally feel barring few stocks like Kefin Technology, BKT, Nazara Tech, many other stocks, momentum is missing in ChatGPT's portfolio, and which will play a quite important role in a portfolio performance of over shorter time frame of 1 year. ChatGPT is more into the contraband investing, which I don't think so is a viable and sensible option, especially for a shorter time frame of 1 year. Many of ChatGPT stocks have a great business model, but it lacks longer track record. Now, to make a battle more interesting and to add a professional human touch, I have decided to add another competitor, and that is Motilal Oswal Midcap Fund. Now, let me discuss reason behind choosing Motilal Oswal Midcap Fund over other mutual funds. Reason number one, what is the reason number one? Consistently delivered higher return over a time frame of 5 years, over a time frame of 1 year, over a time frame of 3 years. That means the mutual fund has a proven track record. The second important reason, that is a proper fulfillment of many of our battle terms and conditions. Do note, since Motilal Oswal Midcap Mutual Fund is an actively managed mutual fund,
Reshuffling of the portfolio is part of their mutual fund service. That's why Motilal Oswal Midcap Fund have an added advantage over me and ChatGPT. Now, let's discuss since the inception my portfolio performance versus ChatGPT's portfolio performance versus Motilal Oswal Midcap Mutual Funds performance. As you can see, here is my portfolio versus ChatGPT's. Here is a Motilal Oswal Midcap Fund, and here is a ChatGPT's portfolio. As you can see, current amount of my portfolio is 10,32,446. Motilal Oswal Midcap's mutual fund stands at 10,06,190. And now ChatGPT's portfolio. Let's check out ChatGPT's portfolio performance. ChatGPT's seen a significant dip in its portfolio. As you can see, 10 lakh invested, but now currently the amount is, as you can see, amount is 9,93,250. That is a significant reduction since the inception of the portfolio. But please note one thing, that as you all know, we cannot buy stocks and you cannot buy anything else in the Indian stock market in a fractions. So sometime what happens, we tried our best to buy and stock with an equal weightage. Let's say for example, I want to buy a one stock with an investment of 1 lakh, but the stock price is trading around 230 rupees. In that case, I won't be able to buy the exact amount of 1 lakh rupees. Either amount will fluctuate between 99 lakh 990s, and amount will be 1 lakh and 100 rupees, etc. and etc. So please keep in mind all those factors. We will adjust all these factors toward the end of the tournaments. So as you can see, my portfolio versus ChatGPT's portfolio performance, and Motilal Oswal Midcap's portfolio performance, and ChatGPT's portfolio's performance from the past few days since its inception. We start battle on the 14th of May 2025. Since then, my portfolio has performed significantly better than Motilal Oswal Midcap Fund, then compared to the ChatGPT's portfolio. So my portfolio is currently doing great. Now let's see overall performance of my portfolio, and let's compare. Let's have an in detail comparison of my portfolio with Motilal Oswal Midcap Fund, ChatGPT's portfolio. Past 1 month, talking about the past 1 month, my portfolio has delivered a return of 7%. Now compared with Motilal Oswal's Midcap Fund, past 1 month performance is a 7.7%. But please note, today's dip is not being recorded in a NAV. That's why it is showing significantly higher. Compared to my portfolio, today's there is overall fall in the broader market indices. So there are the high chances Motilal Oswal Midcap Fund takes a dip as well. So overall, during the time frame of 1 month, my portfolio has significantly performed better than the Motilal Oswal Midcap Fund and the ChatGPT. Here is the 1 month ChatGPT's portfolio performance. As you can see, in 1 month, ChatGPT's portfolio has delivered only 0.4% return. Let's talk about in a broader time frame. Let's check out the return of the 6 month. ChatGPT, as you can see, ChatGPT's portfolio saw a dip of 4% over a 6 month performance. Here is my portfolio versus ChatGPT in a 6 month. In a 1 month, 6 month, my portfolio saw a significant dip of 1%, and Motilal Oswal's Midcap Fund in a 6 month period of 6 months saw a dip of 4%. Again, here in the 6 month time frame as well, my portfolio has performed much better compared to the Motilal Oswal Midcap Fund and ChatGPT's fund. Now talking about the 1 year performance, as you can see, Motilal Oswal Midcap Fund has delivered 19% returns in a 1 year. Here is my portfolio in 1 year. My portfolio has delivered a staggering 30% return, and here is the ChatGPT's portfolio in 1 year. ChatGPT portfolio has shown a significant dip. Now talking about the broader time frame and longer time frame, here is the ChatGPT's portfolio. ChatGPT's portfolio has delivered
731% return. That means money got multiplied by 8x in a 5 year. That's the ChatGPT's portfolio performance. Now talking about the my portfolio and the broader portfolio performance, longer time frame portfolio performance. As you can see, my portfolio has performed much better than the ChatGPT's portfolio in a longer time frame of 5 years. Let's check out the Motilal Oswal Midcap Mutual Fund. Here you can see again I have beaten the Motilal Oswal Midcap Fund as well. So as you can see, here is the past track record of my portfolio along with the Motilal Oswal Midcap Fund, along with the ChatGPT's portfolio. You can see my portfolio has done tremendously well over a time frame of 5 years, over a time frame of 1 year, over a time frame of 6 months, over a time frame of 1 week. My portfolio has done significantly much better compared to both of them. But friends, this is a past record, and the past track record is not a guarantee of the future performance. So let's see how things unfold. But looking at the previous track record, how it is currently going, I am confident that I will be able to beat both ChatGPT's portfolio and Motilal Oswal Midcap Fund. दोस्तों, that's it for today. Let me know in the comment down below what do you think about ChatGPT's portfolio. And once channel complete 1 lakh subscriber, I will disclose of my portfolio completely. Then we will have in detail breakdown of my thought process, rationally behind my stock pick. Till then, try to guess my portfolio stock in the comment down below. That's it for today. Thank you all for watching.